Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair, right? So, to this, I remember Socrates' quotation, as Socrates says that unexamined, life is not worth living. To this, what he meant is that we should examine life, right? Socrates was not talking about exams; he was talking about awareness, right? He believed that a person who does not question the world around them is not truly living; they are not truly existing. So today, when we read current affairs, this is what we exactly do. We'll observe the society, we'll question the society. And if you remember, then I've told you that Socrates is the one who questioned, each and every one of us, right? He asked those kinds of questions which we are afraid to ask even in 2025, right? And then this was the reason that he died. But anyways, so to this, we'll start with our first current affairs. As I've told you before as well, that make sure that you are handling and understanding the keywords that I'll be dictating you, and make sure that you're writing it and combining it with the papers. Okay, so let's start with our first current affairs. Okay, so our first current affair is the Congress accuses Modi government of changing MGNREGA to take credit for revolutionary scheme. Okay, so now imagine this with a story. Imagine a village where people depend on government schemes, government program to work, right? And for wages and for like survival during hard times, they are totally dependent on government, right? Now the program had existed for many years and people know it by the long name that is MGNREGA, right? So now imagine that one day you hear that government is planning to change the name of the scheme, right? So not to work, not to its benefit, but only its name. So this is exactly what caused a political storm in the India. So the Congress party has accused Modi government that you have a history of changing names, as this was seen also कि बहुत सारी जगह का नाम चेंज कर दिया गया है, स्टेडियम्स का नाम चेंज करने की बात आती है. So this is like the political ideology is totally dependent on the changing names, right? It's like emotionally they are like trying to break us, trying to break, and this is the reason when we talk about divide rule policy, like this is the what government is trying to do, right? So when we talk about this, they said that the government is like trying to remove the name of the former prime minister, right? This is what the opposition party is saying, that you are trying to remove former prime minister name Rajiv Gandhi from this, right? So from MGNREGA and replace it with the more generic name to this. So this government side responded by saying that we are not changing anyone's name, हम नाम नहीं बदल रहे, right? We just want some natural neutral name, right? So government program should not carry any political family name to it. अगर कोई scheme चल रही है तो उस पर basically history नहीं होनी चाहिए. The scheme should only focus on their work और basically उसका motive क्या है, सिर्फ उस चीज पर focus करना चाहिए. This is what the Modi government is saying right now. तो दिस ऑपोजिशन रिप्लाइड, ऑपोजिशन ने क्या कहा है कि आप जो MGNREGA है वो स्कीम नहीं है, वो सिर्फ, ठीक है, उसमें एक देखा जाए तो एक हिस्ट्री पॉलिसी अचीवमेंट है, ठीक है, और देखा जाए तो वो एक बेसिकली अगर आप नाम अगर चेंज कर देते हैं तो यू आर समवेयर रिमूविंग द हिस्ट्री, राइट? वो जहां से शुरू होके आ रही है, यू आर रिमूविंग दैट फ्रॉम दिस. सो दिस इज नॉट ओनली अ स्कीम, दिस टेल्स अबाउट द स्टोरी, द नेम टेल्स अबाउट द स्टोरी, राइट? सो द फाइट इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट अलोन, बल्कि जो लड़ाई है वो एक पॉलिटिक्स की भी है, लेगेसी की भी है, क्रेडिट की भी है, आइडियोलॉजी की भी है, और देखा जाए तो सिंबोलिज्म की भी है, राइट? तो बेसिकली इशू क्या है यहाँ पे? इशू जो है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, ये इशू की बात करते हैं यहाँ पे तीन इशू है, ठीक है. पहला इशू हमारा जो है वो क्रेडिट पॉलिटिक्स का है. अगर हम क्रेडिट पॉलिटिक्स की बात करें तो बेसिकली ये क्वेश्चन करता है दैट हु गेट क्रेडिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, राइट? एंड शुड स्कीम्स रिमेंबर पास्ट लीडर और बी न्यूट्रल टू इट. पहला क्रेडिट पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है. दूसरा ये बात करता है वेलफेयर वर्सेस सिंबोलिज्म के बारे में. वेलफेयर वर्सेस सिंबोलिज्म के बारे में ऐसे बात करता है, ये क्वेश्चन करता है डज चेंजिंग नेम्स इंप्रूव गवर्नेंस, या फिर ये कोई पॉलिटिकल मैसेज ड्रॉप कर रहा है, राइट? देन थर्ड थिंग इट चेंजेस एंड टॉक्स अबाउट इज कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट, कि जो गवर्नमेंट चेंज होती है, राइट, बट शुड वेलफेयर स्कीम्स रिमेन इंस्टीट्यूशनली कंटिन्यूएशन या फिर पॉलिटिकली ब्रांड बना दिया जाए इसको? शुड वी रिमेंबर दोज पीपल जो पॉलिटिकली स्कीम को लेकर आए थे, या फिर बेसिकली इसकी आइडियोलॉजी सिर्फ इतनी सिंपल रहनी चाहिए कि जो स्कीम तक मैटर करे, राइट? सो दीज थ्री क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड. इज दिस अंडरस्टूड? Okay. Now when we question that why we are studying this because of GS paper 2, right, which talks about polity and governance. We are reading this for GS paper 2, right, which talks about welfare schemes, governance, parliament. GS3, which talks about rural employment, inclusive government. GS4, ethics, credit versus responsibility. Interview basically important है because it is mentioning about welfare state, continuity of public policy, और opposition के views क्या matter करते हैं और क्यों matter करते हैं, right? Now let's understand one by one. I hope this is understood कि हम news की पढ़ रहे हैं. अब
रिसेंटली डिबेट में क्या है कि पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुई है कि बेसिकली जो भी न्यूज़पेपर में राइट जो भी पॉसिबल रीनेमिंग है राइट वो उसकी मेंशनिंग बहुत ज्यादा आ रही है राइट. सो दिस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एट फर्स्ट ग्लांस चेंजिंग नेम में लुक लाइक स्मॉल इशू कि नाम ही तो बदल रहा है. व्हाट्स अ बिग इशू? अगर ना तो उसका मोटिव चेंज हो रहा है, ना उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, ना उसके फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, ना उसके एसेट चेंज हो रहे हैं. द ओनली थिंग चेंजिंग इज नेम. ठीक है, तो व्हाट्स द बिग इशू है राइट. बट देन इट रेजेस मेनी मेनी क्वेश्चंस कि हर बार नाम बदलना जरूरी क्यों है एंड व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी इज डूइंग दिस राइट. एज आई हैव सेड यू बीइंग अ सिटीजन of it. नहीं एनालाइज करेंगे तो विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रोपेगेंडा, विल नॉट अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी, विल नॉट अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड दैट राइट. व्हाटएवर द मोटिव इज गुड और बैड राइट. सो हम मनरेगा की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था हमारे पास कब? 2005 में राइट. कब लॉन्च हुआ था? 2005 में राइट. ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट इट वाज लॉन्च. अगर हम फीचर्स की बात करें था नहीं छोड़ रहा है. Okay. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें विच यू हैव टू नोट डाउन कि पहले तो ये 100 डेज ऑफ वेज की बात करता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को ये स्पेशली बनाया गया था रूरल हाउस होल्ड्स के लिए राइट. फोकस ऑन अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. तो स्पेशली होता क्या है कि जब भी माइग्रेशन होती है राइट फ्रॉम रूरल टू अर्बन राइट. तो क्या होता है उसकी वजह से जो वहाँ की स्किल्ड लेबर है वो यहाँ पर आ जाती है राइट. सो दिस इज अ इम्बैलेंस फैक्टर. तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए दिस वाज राइट. सो क्या हुआ कि दिस हेल्प्स टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, डिस्ट्रेस माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो व्हिच यू हैव टू राइट डाउन. और दूसरा ये बात करता है कि लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर और स्कीम जो है ये सबसे पूरे वर्ल्ड में है राइट. सो इट इज नॉट जस्ट अ स्कीम, इट इज बेसिकली अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अ बिग लॉ दैट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. और इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिले हैं. अब ये मनरेगा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नाम जो है बेसिकली पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली सिंबॉलिक है राइट. एज इट कैरीज हिस्ट्री विद इट. पहला तो है महात्मा गांधी. ठीक है, as father of the nation, and he's like symbol of truth, dignity, labor, self reliances, and it attaching his name like gives the scheme moral authority right. Then it talks about Gandhi's political legacy also. So the law was introduced by Congress led government. ठीक है, तो political ideology भी है इसमें, as like it indirectly reflects the Rajiv Gandhi और नेहरू गांधी की legacy right. मगनरे का नाम जब भी आता तो कांग्रेस उसके बाजू में आती है राइट. दिस वी हैव लर्न. तो इसीलिए दो चीजें फैक्टर्स की वजह से दिस क्वेश्चन ऑपोजिशन आर लाइक रेजिंग द इशू विद इट. ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी में है. क्यों कंट्रोवर्सी में है? क्योंकि ऑपोजिशन मेनली कांग्रेस आर्ग्यू कर रही है कि जो गवर्नमेंट हैज लाइक अ हैबिट ऑफ रीनेमिंग स्कीम्स. जब भी कोई स्कीम आती है स्पेशली जो पुरानी स्कीम्स है उनको आप रीनेम कर रहे हो राइट. सो रीनेमिंग मनरेगा वुड बी अटेम्प्ट फॉर इरेज द लेगेसी ऑफ प्रिवेंसिस गवर्नमेंट्स. जो पहली गवर्नमेंट्स थी उसकी कहीं ना कहीं आप लेगेसी मिटाने की कोशिश कर रहे हो. दिस हैज बीन लाइक क्लेम. सो दे से दैट यू मे चेंज द नेम बट द स्कीम्स की जो फिलॉसफी है वो हमारी ही रहेगी. दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन सेड. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो वेलफेयर स्कीम की नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल क्रेडिट की भी है राइट. सो गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली वेलफेयर स्कीम तक सीमित रह के पॉलिटिकल न्यूट्रल पर आ जाती है. और उसके बाद ये क्वेश्चन करती है कि क्या कोई लीडर या पार्टी राइट उसको इस चीज में बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए. एज प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट राइट, they have the full power if they want to change it or not right. So this question tells us that how the government and politics actually works in this way. ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी में बात की होती है तो बेसिकली बहुत बड़ा सवाल उठाती है दैट हु शुड गेट क्रेडिट फॉर वेलफेयर. या तो स्टेट को मिलना चाहिए या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को मिलना चाहिए. सो दिस इज द डिलेमा इज बिटवीन स्टेट वर्सेस पॉलिटिकल लीडर. Then again the present party is like trying to change it right. The dilemma is there क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, they have the power. But then again this is a debatable issue, तभी तो वहां पे बहस हो रही है उस चीज को लेके. ओके, अब ओके डेमोक्रेसी जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट की ठीक है
तो पॉलिटिक्स जो है हमेशा साथ में चलती है हमारे, पर हमेशा क्रेडिट क्लेमिंग becomes very politics to us, right? So reclaiming and this is like a tool to us कि basically इस चीज को काम कैसे करें, ओनरशिप क्लेम करें या नहीं करें, शेप करें पब्लिक मेमोरी को या नहीं करें, राइट? या फिर अपनी हिस्ट्री को साथ में लेके चले या नहीं चले, राइट? दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। तो अब बेसिकली जानते हैं कि क्या रीनेमिंग अफेक्ट करेगा, जो हमारे बेनिफिशरीज है उसको अफेक्ट करेगा, मनरेगा का जो रूल है, राइट, जो बेनिफिट्स हमें इससे मिलते हैं उसको अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो नहीं, राइट? डायरेक्टली कैसे नहीं बात करेगा, बेसिकली वर्कर्स को तभी भी वेजेस मिलेंगे, राइट? और जो जॉब कार्ड्स हैं वो तभी भी वैलिड रहेंगे, और उसके साथ साथ स्कीम जो है वो तभी भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो बिल्कुल ये अफेक्ट करेगा। इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगा? पॉलिटिकली ये क्वेश्चन करेगा चीजों को, पॉलिटिकली ये काफी चीजें चेंज करने वाला है। कैसे चेंज करने वाला है? पहले तो पब्लिक परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, एज इट इंक्लूड्स कांग्रेस नेम्स विद इट, टू पॉलिटिकल लीडर्स टू इट, राइट? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो चीज हमारे दिमाग में चली जाएगी। इन द कमिंग टाइम विल फॉरगेट दैट फ्रॉम दे वेयर दिस स्कीम इज कमिंग, राइट? अगर हम नाम चेंज कर देते हैं। दूसरा, हिस्टोरिक मेमोरी जो है हमारी शिफ्ट हो जाएगी, क्रेडिट मूव जो है वो एक पॉलिटिकली से दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो इनडायरेक्टली तो ये करेगा, डायरेक्टली कुछ भी चेंज नहीं करेगा, एज द पर्सपेक्टिव इज द सेम, द स्कीम ऑफ द स्कीम्स, राइट? समझ में आया इतना? Okay. Now, from this we understood that law is passed by the parliament and this guarantees 100 days of age of wage employment to rural household and one of the world's largest rural welfare poverty alleviation schemes. As the reason of bringing this law was ताकि जो माइग्रेशन हो रही है वो इतनी बल्क में ना आए और जो भी रूरल हाउस है, रूरल प्लेसेस है, राइट, वहां पर भी हमारे पास बेनिफिट्स रहे, राइट, वहां के डेवलपमेंट के लिए वो सीन टू अस। नाउ what sparked the debate? So Congress accused that Modi government of planning to rename MGNREGA, right? And the allegation is that government wants to remove Gandhi past leadership legacy, and government reply to this is that scheme should leave neutral and no political names to it. तो कोई भी बेसिकली एज द गवर्नमेंट चेंजेस तो जो भी हमारी हिस्ट्री है उसको साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, वो न्यूट्रल रहनी चाहिए, राइट? या द नेम शुड बी न्यूट्रल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी चेंज होती रहती है। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सेइंग, मोदी इज सेइंग कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है, राइट? बट जो स्कीम है वो तो सेम ही रहती है ना, इट इम्प्लीमेंट्स एवरी टाइम, ठीक है? तो उसको चेंज ना करते हुए, हम हिस्ट्री को लेकर ना चलते हुए, कोई लेगेसी को चेंज ना करते हुए, हम उसको हटा देते हैं नाम को, और किसी भी स्कीम में हम पॉलिटिकल नाम नहीं रखेंगे। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सेइंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इट इज गुड। व्हाई? But don't you think that it's unfair to the government because they implemented it, right? They did so much to it, and they should have the ownership. They should claim it. No, the dilemma is between this. They are saying that they should not change it. They are saying कि basically हमारी history है उसके साथ में. The Congress name is there, right? And if you'll remove it, you'll remove the legacy, and that should not be done. This is what the opposition government is saying. So, one question to you. This is what you have to write down in the next class. चलो, समझ में आई कहानी यहाँ तक? Okay. Another pointer: why are NVIDIA chips being sold to China again? Okay. Very, very important. Imagine करो, country A and country B. Okay. दो नेबर्स है हमारे पास, एक कंट्री ए और एक कंट्री बी, ठीक है? दोनों ही बहुत ज्यादा स्मार्ट है और दोनों ही डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट? They want to lead in future technology and they are working towards this, that is artificial intelligence, right? Which needs super powerful corrupted chips, right? So think of these chips as the like the brains, right? And they are very much needed. और basically इसमें से एक हमारे पास गवर्नमेंट है, एक कंट्री है जो हमें ये सप्लाई करती है, राइट? So this is the situation that is occurring between two countries. Now imagine that country A was worried कि basically जो भी हम जो powerful chips हम भेज रहे हैं, right, to country chips to country B, right? तो ये country B है हमारे पास चाइना, तो country A भेज रही है chips to the country B, right? Now the chips are so powerful that they can be used only for phones or laptops, but for the AI systems also, right? And the data centers and basically research और military applications के लिए भी ये chips use की जा सकती है, right?
So for several years, country A was like worried that selling these powerful chips to country B, that is China, might help country B in building military technology. ठीक है, अब जो भी टेक्नोलॉजी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, तो this what will happen, that country will become strong, right? So this is the worried that this country A is coming up with, right? So basically recently भी क्या हुआ कि country A ने, right, this government did a U-turn. What it did, it like decided कि हम जो NVIDIA है, right, वो बेसिकली हम एक ही टाइप की चिप आपको भेजेंगे, दैट इज H20. ठीक है, हम एक ही टाइप की चिप आपको भेजेंगे, सिर्फ H20 टू चाइना, अगेन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जैसे कि हमारी लाइसेंसिंग हो गई, ओवरसाइट होगी, या फिर जो भी प्रॉफिट होगा, वो शेयरिंग जो होगा, वो आप बेसिकली कंट्री एक को दोगे. ठीक है, दिस कंडीशंस हैव बीन पुट टू द कंट्री बी, राइट? नाउ दिस वाज लाइक अ बिग डिसीजन because it like reversed earlier restrictions, as it reflects about how like technology, business, geopolitics are like connected to it. ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि जो कंट्री ए है वो हमारे पास चिप्स भेज रही है कंट्री बी को, राइट? टू दिस कंट्री ए इज वरीड कि हम जो चिप्स भेज रहे हैं दैट आर सो पावरफुल, वो कहीं ना कहीं मिसयूज कर सकती है कंट्री बी, राइट? तो नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट ओनली दिस काइंड ऑफ चिप वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू कंट्री बी, और वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ. ठीक है, अब इस बारे में डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली कहानी है क्या. पहले तो ये समझो कि ये हमारे पास जरूरी क्यों है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज. Okay, so we are reading this news because it covers GS paper 2, right? That is governance, welfare schemes, parliament debates के बारे में भी, right? Then it talks about GS paper 4 also, essay and interview also, right? तो अगर हम देखा जाए तो ये तो बस एक कहानी में एक ही कंट्री की लगेंगी, दैट इज कंट्री ए, विच इज NVIDIA, राइट? बट ये कहानी दो कंट्रीज की है, एंड दिस शोज अबाउट द फियर about the technology, right? And about the fear of giving that technology in someone's hand, जिससे हमें डर लग सकता है कि वो मिसयूज हो सकती है, राइट? नाउ रियलिटी में अगर हम बात करते हैं, ये ग्लोबल पावर के बारे में बात करता है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल के बारे में बात करता है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, और दूसरा हमारे बारे में बात करता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, राइट? एंड दे आर लाइक UPSC themes which could be asked in the prelims also. अब आपको ये प्रॉपर्ली समझने की जरूरत है कि NVIDIA जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट, ये हमेशा एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स बनाती है, स्पेशली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स, राइट? नाउ दीज चिप्स आर यूज्ड इन डेटा सेंटर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में यूज होती है, और सुपर कंप्यूटर्स में यूज होती है, एंड दिस क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है, मिलिट्री सिमुलेशंस में यूज होती है, और एडवांस रिसर्च में ये चिप्स यूज होती है, राइट? अगर हम बात करें तो दिस AI इज द ब्रेन, राइट? एंड दिस NVIDIA चिप्स आर द नर्वस सिस्टम, राइट, जिसके हिसाब से वो सारी चीजें चलती है. समझ में? तो अगर आज के बारे में बात करें तो NVIDIA इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वल्नरेबल वैल्यूएबल टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड. नाउ जब हम AI चिप्स की बात करते हैं तो दीज आर पॉलिटिकली सेंसिटिव टू अस. क्यों है? क्योंकि AI चिप जो है हमारे पास डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, राइट? दे कैन बी यूज्ड एंड दे कुड बी मिसयूज्ड आल्सो. तो दे कैन बी यूज्ड फॉर सिविलियन पर्पसेस आल्सो, कि आपके हेल्थ केयर में यूज हो गई, रिसर्च में यूज हो गई, या फिर बिजनेसेस में यूज हो गई, राइट? और दे कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री आल्सो, सर्वेलेंस आल्सो, साइबर वेलफेयर आल्सो. ठीक है, इन दोनों ही चीजों में ये यूज होती है चिप्स. अब क्योंकि AI चिप्स आर सीन एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो लाइक द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स, राइट? दिस इज व्हाई वी आर कवरिंग दिस न्यूज, दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट इट. अब बात करते हैं कि बेसिकली यूएस ने रेस्ट्रिक्ट क्यों करी है ये चिप्स एंड टू एक्सपोर्ट टू दी चाइना. तो बहुत साल से क्या हो रहा था कि यूएस और चाइना हैव बीन लाइक कंपीटिंग फॉर लाइक ग्लोबल लीडरशिप, है ना? हमेशा से उनका बीच में देखने को मिलता है. तो टेक्नोलॉजी, AI, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, हमेशा ही इन दोनों के बीच में ये राइवलरी हमें देखने को मिली है. ठीक है, तो यूएस को थोड़ा डर लगा, यूएस को लगा कि चाइना कुड यूज एडवांस चिप फॉर मिलिट्री AI, या फिर सर्विलेंस सिस्टम के लिए यूज कर सकती है, या फिर ये साइबर कैपेबिलिटीज के लिए भी यूज कर सकती है. ठीक है, तो विद दिस व्हाट यूएस गवर्नमेंट सेड कि जो भी NVIDIA में जो चिप सेल हो रही है, दे आर NVIDIA से जो हमारी चिप सेल हो रही है वो हम जो है बेसिकली भेजेंगे तो सही, बट विद सम restrictions, and they use export control law, that is like silencing national security. तो इससे क्या हुआ? दिस वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर US चाइना टेक वॉर. तो अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ किया NVIDIA को मॉडिफाइड वर्जन ऑफ AI चिप्स भेजने का चाइना में. ठीक है, तो नॉट द मोस्ट पावरफुल चिप, बट बल्कि जो स्लाइटली जो डाउनग्रेडेड वर्जन है, दैट इज H20, राइट? H20 H200, उसको भेजने का उन्होंने डिसाइड किया है, राइट? बट विद सम गवर्नमेंट लाइसेंसेस, और उसके बाद मॉनिटर करेंगे और बहुत सारी कंडीशंस के साथ ही भेजेंगे. ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली देखा जाए तो ये नहीं है कि वो प्रॉपर लाइक दे आर लाइक बैनिंग और समथिंग.
वो कंट्रोल कर रहे हैं बट विद सम रिलैक्सेशन, ठीक है। नाउ अब यूएस ने बेसिकली अलाउ क्यों किया? यूएस इज लाइक ट्राई टू बैलेंस टू कंपीटिंग गोल्स। पहला गोल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी, एज आई सेड कि एआई चिप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री के लिए, सर्वेलेंस के लिए, साइबर वॉर के लिए, राइट। सो इसी चीज को मैनेज करते हुए, इसी चीज को बैलेंस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न ये कहीं ना कहीं रेज करता है, राइट। एज इट इज लाइक प्रिवेंट चाइना फ्रॉम गेटिंग कटिंग एजेस मिलिट्री एआई टेक, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो। व्हाई इकोनॉमिक? तो नवीडिया जो है बहुत ज्यादा चाइनीज मार्केट से अर्न करता है, राइट। एंड कंप्लीट बैन विल हर्ट यूएस इकोनॉमी, राइट। सो टू बैलेंस दैट उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं बट बैन नहीं किया है, राइट। So US is like the middle path. The US chose the middle path, that is like allow limited export but under some strict rules to it. तो अब ये डिसीजन थोड़ा सा स्लो होगा और बेसिकली ये हमें दिखाता है कि डिसीजन टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में, और ये बेसिकली लिंक करता है कि कैसे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, राइट। अगर बैन करता तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिव रिलेशनशिप भी दिखा सकता है टुवर्ड्स द चाइना एंड यूएस, राइट। बट व्हाट यूएस डिड, यूएस बैलेंस्ड इट, राइट। दूसरा कि ट्रेड जो है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रह गया, अब इट्स मोर लाइक स्ट्रेटेजिक, राइट। पहले सीधा बैन कर दिया जाता था बट इट्स मोर लाइक स्ट्रेटेजीज। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कौन बेच सकता है, राइट, किसको बेच सकता है और कब बेच सकता है। सो दीज क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय हूम, बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी दैट इज मिक्स्ड विद सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सवाल होता है कि डू एक्सपोर्ट्स बैन रियली स्लो डाउन अ राइवल कंट्री, या फिर do they like push it to the develop to its own technology faster, ठीक है, खुद की डेवलपमेंट शुरू कर देंगे वो, क्या, राइट, या फिर बेसिकली वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दीज न्यूज रेजेस टू अस, और ऐसा इंडिया में भी देखने को मिलता है। अगर कहीं से कोई चीज बैन हो जाती है, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं खुद से इंडिपेंडेंट बनने का, खुद से हम लोग बिल्ड करते हैं चीजें बनाने का। तो ये चीज भी, ये न्यूज भी यही क्वेश्चन रेज करती है कि क्या अब क्योंकि यूएस इज लाइक गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट, राइट, दे आर गोइंग टू इंपोर्ट सम कंडीशंस टू इट, so is China going to be more reliable या फिर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तुम बताओ। मोर रिलायबल, ओके। तो बहुत ज्यादा लोगों का ये मानना है कि restrictions में भी फोर्स चाइना टू बिकम सेल्फ रिलायंट, राइट। चाइना में इन्वेंट मोर इन इट्स ओन चीप इंडस्ट्रीज एंड इन द लॉन्ग रन बैन्स कुड रिड्यूस द यूएस टेक डोमिनेंस आल्सो। जो यूएस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, द कंडीशंस दैट दे आर कमिंग अप विद, दे कुड बी रिड्यूस्ड इफ दे आर डेवलपिंग, इफ दे आर लाइक come up with their own industries, right? तो अब ये मैटर करता है, दिस डिसीजन कैन अफेक्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप आल्सो एंड एआई इनोवेशंस आल्सो, सप्लाई चेंजेस आल्सो एंड ट्रेड रिलायबिलिटी आल्सो एंड पावरफुल बैलेंस बिटवीन मेजर कंट्रीज, ठीक है, कि दोनों पावरफुल बैलेंस कैसे लिंक करके चल सकते हैं, एज दिस इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली, राइट, पॉलिटिकली चीजें रिलेट करता है, राइट। और अगर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होते हैं तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल और इकोनॉमिकली बैलेंस कंट्रीज है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न करेगा टू दी डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो, टू अस आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग टू इट, अंडरस्टूड। So this also tells and impacts that smaller countries that depend on the US or China's tech, and also questions that why like we are still dependent on each other. अगर हम dependent है, what are the conditions we should impose और हमें कितना सहना चाहिए. So these are the questions that this news tells us. ठीक है. Good morning. Okay, is this understood? The rivalry is understood. So NVIDIA, that is US based company, is making advanced AI chips, ठीक है, और these chips are very powerful, ठीक है, and they are like data centers, supercomputers, military simulations में use होती है. These AI chips are dual use, civilians और military में, civilians में they could be used for healthcare, ठीक है, या फिर civilians के लिए, military में they could be used as a weapon also, right? This is why this is a concern for US and China both, right? Now what happened earlier, that US ban restricted NVIDIA from selling powerful chips to China. कि कहीं ना कहीं वो पावरफुल हो जाएगा एंड इट कैन यूज इन अ मिलिट्री बेसिस आल्सो. सो टू स्टॉप दैट इट केम विद सम रिस्ट्रिक्शंस, राइट, विद सम कंडीशंस कि हम भेजेंगे तो सही, बट उसका पावरफुल वर्जन हम नहीं भेजेंगे, उसका कम वाला वर्जन भेजेंगे, दैट इज H20 एंड H200, राइट. नाउ रीजन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न रेज करता है, इट कुड बी यूज्ड इन मिलिट्री एआई, सर्विलेंस पे और साइबर यूज में भी. एज पार्ट ऑफ द यूएस एंड चाइना टेक वॉर कुड बी सीन, राइट. These two countries are always in news because of that. Now US ने allow किया NVIDIA को modified chip भेजने के लिए, right? That is H20, H200 and sales only with a government license and strict monitoring, not a full rollback and control relaxation. Understood? Next news, that is how will Australia's social media ban work? Okay, another important news which could be used in ethics and SEO also. Okay.
इमेजिन करो कि इट्स लाइक अ डिजिटल प्लेग्राउंड दैट इज सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया एक डिजिटल प्लेग्राउंड है और यहाँ पे हमारे पास गेम्स है, वीडियोस है, लाइक्स है, कमेंट्स है, रील्स है, मैसेजेस है, सब कुछ है इस प्लेग्राउंड में आपके पास। एंड चिल्ड्रन लव प्लेइंग देयर, ठीक है, उनको बहुत मजा आता है, दे लव टू स्पेंड देयर टाइम देयर। बट द प्लेग्राउंड हैज सम प्रॉब्लम्स टू, ठीक है। यहाँ पे बुली होती है, एडिक्शन बहुत ज्यादा है, हार्मफुल कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है, फेक न्यूज बहुत ज्यादा होती है, मेंटल हेल्थ हमारी खराब होती है, राइट। हेल्थ स्ट्रेस ज्यादा होता है, एज वी कुड सी ऑल्सो कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक होने लगता है, राइट। दे गेट मोर डिप्रेस, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस, अब इमेजिन करो कि एक टीचर है, द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट, एंड दे आर वाचिंग दिस प्लेग्राउंड, और उन्होंने बोला है कि फाइनली अब ये प्लेस जो है वो सेफ नहीं है फॉर द यंग चिल्ड्रन, and we need some rules and regulations, some restrictions to it. We should do something about it. This is what the Australia is saying, right? So Australia decided कि चलो एक बहुत अच्छा सा strong सा step लेते हैं towards it. So it announced a plan to ban children below a certain age from using social media platforms, right? तो बेसिकली अब यहाँ पे दो बहुत सवाल बड़े सवाल होते हैं कि एक्चुअली बैन काम कैसे करेगा, हाउ विल द बैन एक्चुअली वर्क, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 दैट हैज बीन रेज्ड इज हाउ विल द गवर्नमेंट नो हु इज चाइल्ड एंड हु इज नॉट, ठीक है। इन दोनों चीजों में तुम लोग बैलेंस कैसे करके चलोगे, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। अब एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया प्लान करने की कोशिश क्या कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू स्टॉप चिल्ड्रन अंडर 16 इयर्स फ्रॉम एक्सेसिंग मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, राइट। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली वांटेड टू मेक लाइक अ लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम कोई चीज लीगली बनाते हैं तो बेसिकली वो ग्लोबली भी फैलती है, राइट। एज ऑस्ट्रेलिया डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो और कंट्रीज पर भी इम्पैक्ट करेगी, एज इट विल रेज क्वेश्चंस आल्सो टू अदर कंट्रीज कि ये चीज सिर्फ वहां ऑस्ट्रेलिया में के बच्चों में देखने को नहीं मिल रही है, बट वर्ल्ड वाइड इट कुड बी सी, राइट। सो इसका मतलब ये है सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगी। इफ दे फेल दे कैन फेस हेवीली फाइन्स आल्सो, पनिशमेंट भी दी जाएंगी, फाइन्स भी दी जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ, राइट। नाउ द बर्डन इज नॉट ऑन चिल्ड्रन और पेरेंट्स बट दिस इज ऑन टेक कंपनीज, राइट। नाउ अब ये बैंक काम कैसे करेगा, तो थिंक अबाउट लाइक एन एज चेक सिस्टम, ठीक है, जैसे कि सिनेमा में होता है अडल्ट मूवीज के लिए, राइट। चेक सिस्टम होता है वहाँ पे, एज चेक सिस्टम की इतनी ही एज वेरिफिकेशन होगी, राइट, एंड देन यू आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स अ मूवी। तो यही चीज यहाँ पे होगी कि पहला होगा हमारे पास एज वेरिफिकेशन व्हिच यू हैव टू राइट डाउन कि सोशल मीडिया कंपनी जो है वो दे आर लाइक रिक्वायर्ड टू वेरीफाई दिस यूजर एज बिफोर अलाउइंग एक्सेस, एंड दिस कुड इंक्लूड गवर्नमेंट इश्यू आईडी आल्सो, ठीक है, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम आल्सो, और तीसरा हमारा इंक्लूड कर सकता है थर्ड पार्टी एज वेरिफिकेशन टूल्स, ठीक है। ये टूल्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। एग्जैक्टली मेथड जो है वो अभी भी डिबेट में है, वो अभी भी डिसाइडेड नहीं है, राइट। दूसरी चीज क्या रहती है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म्स। अगर चाइल्ड इज लाइक बिलो 16, right, and manages to use social media, so the company and not the child will be punished. That company will be punished. Parents को punishment नहीं होगी, but that company will be punished, right? So penalties can be very high, as government is taking it very seriously. So this like shifts from the individual to corporation, right? This is why it is in the news, and this is why we are reading to it, right? Then it is like phased implementation also, as it tells कि जो भी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, right, that is like switching of social media oversight, as this law will be implemented gradually, ठीक है, एकदम से नहीं होगा। गवर्नमेंट विल फर्स्ट कंसल्ट टेक कंपनीज के साथ कंसल्ट करेगी, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करेगी, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करेंगी, एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करेंगी कि अगर हम बैन कर देते हैं व्हाट फैक्टर्स आर दोस चिल्ड्रन आर गोइंग टू गो थ्रू, ठीक है, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो सारी की सारी चीजें कंसर्न में ली जाएंगी, राइट। चौथी चीज जो हमारे पास आती है वो है प्रिवेसी कंसर्न, ठीक है। अब सबसे बड़ा ही जो हमारे पास मुद्दा है वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स आर आस्क फॉर आईडी, then what harm it could be used in the user privacy also, right? So Australia had promised that age verification system जो भी हमारे पास होगा that will be privacy protective like, right? तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो मिनिमम होगा और सिर्फ इतना होगा जो ताकि एज वेरिफिकेशन के लिए हो, राइट, एंड इट विल बी वेरी सिक्योर, ठीक है। तो इस चीज पे दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया हैज रिप्लाइड। So this creates a privacy or versus safety debate. The dilemma that you can write about in ethics also, privacy versus safety debate. Now ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऐसा स्टेप ले क्यों रही है, वो ले रही है क्योंकि बहुत टाइम से फ्रॉम ओवर द लास्ट डिकेड ऑस्ट्रेलिया हैज सीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अमंग्स टीनेजर्स स्पेशली, और दूसरा साइबर बुलिंग, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, राइट। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर जो केसेस आते हैं वो इसी कंट्री से आता है। दूसरा ऑनलाइन हेरेसमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और एडिक्शन जो है स्क्रीन से बहुत ज्यादा देखने को मिला है, राइट। तो दिस इज लाइक एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट आल्सो व्हिच इज कमिंग फ्रॉम टिकटॉक, फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
और बेसिकली ऑनलाइन ग्रूमिंग और एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया एंड स्टडी ऑल्सो शोड कि ये जो एग्जिस्टिंग एज लिमिट है दैट इज लाइक यूजुअली 13 years, they were like poorly enforced because of these media, because of these apps, right? तो इस पे क्या है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रंस है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, दे आर लाइक एक्सप्लॉइटिंग एंड दे आर लाइक ऑल्सो लाई अबाउट देयर एज, राइट? सो दिस क्रिएट अकाउंट्स इजीली एंड यूज सोशल मीडिया विदाउट एनी रियल चेक्स आल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेजर्स लेने के लिए बोला गया, ठीक है? अब अगर हम ये पढ़ ही रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहला स्टेप लिया, राइट? व्हाई नॉट अदर कंट्रीज? तो हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो बेसिकली जो जब भी हमारे पास डिजिटल लॉज की हिस्ट्री आती है तो ऑस्ट्रेलिया इज लाइक कंसर्न इज कम अप विद मोस्ट स्ट्रिक्ट डिजिटल लॉज, ठीक है? तो पहला स्ट्रिक्ट लॉज देखने को लिखा जाए तो वो है ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, दैट इज 2021। So this created the e-safety commissioner, allowed quick revival of harmful content, जैसे कि फोकस करता है कि जो भी बच्चा है, राइट, एंड ही और शी इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द ऑनलाइन सेफ्टी थिंग्स, तो वो बेसिकली वहां पे सेफली एक्सपोज कर सके खुद को, राइट? कोई हार्म ना हो, कोई बुली ना हो, कोई हरेसमेंट ना हो, राइट? Then there is another, that is news media bargaining code, that is 2021, right? This is like the forced Google and Facebook to pay news publisher and showed Australia's willingness to challenge big tech companies, ठीक है? तो हमेशा अंडर 16 सोशल मीडिया बैन इज पार्ट ऑफ अ लॉन्गर ट्रेंड ऑफ डिजिटल कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। जब भी डिजिटली कंट्रोल की बात आती है तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया पहले पे होता है बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन अप्लाइड इन दिस कंट्री, ठीक है? समझ में आया? अब वही बात करते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए पर इसमें बेसिकली इंप्लीमेंट कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसका? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया कंपनीज की ही होगी, फैमिलीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इस पर, ठीक है? तो कंपनीज मस्ट वेरीफाई यूजर्स एजेस, ब्लॉक अंडर एज अकाउंट्स, और दूसरा डिजाइन करो सिस्टम को इस तरीके से कि जो चिल्ड्रन है अंडर एज 16 वो उस चीज को ज्वाइन ही ना कर पाए, राइट? दीज आर द कंडीशंस दैट ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग अप विद, एंड इफ दे फेल देन दे कैन फेस हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज आल्सो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दिस इज लाइक द टास्क दैट इज गिवन टू द टेक कंपनीज आल्सो, राइट? द प्रेशर दैट इज गिवन टू देम। सो अगर ये आइडिया फॉलो होता है, सो दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम द डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट यूजर्स आल्सो, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। तो हाँ, अब ये एज वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि दिस इज लाइक द कोर डिफिकल्टी। एज आई सेड कि वो पहले क्या करते थे, वो झूठी अपनी आईडी बना के दे कुड बी लाइक यूज्ड, राइट? नाउ पॉसिबल मेथड जो है वो भी डिस्कशन में चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि आईडी चेक्स इश्यू करो, ठीक है? और दूसरा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन टूल्स इश्यू करो, और तीसरा आप क्या कर सकते हो, डिजिटल एज टोकन्स आप यूज कर सकते हो, राइट? इन सारी चीजों को यूज करो और उसके बाद वेरीफाई करो कि वो बच्चा अंडर एज 16 है या फिर नहीं, राइट? अब कोई फाइनल मेथड अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हर एक मेथड बेसिकली ये कंसर्न करता है कि प्रिवेसी का क्या, डाटा प्रोटेक्शन कंसर्न का क्या, राइट? उस बच्चे की जो प्रिवेसी है that could be misused also, right? So this is why the policy is still being in task. समझ में आई इतनी कहानी? तो क्रिटिक्स को अब इस चीज की भी टेंशन है कि these children's data may be like collected, surveillance में increase, right? प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बेसिकली सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन भी तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो डाटा ब्रीच हो सकता है हमारा, और दिस कुड लाइक एक्सपोर्ट यूजर्स एज वेल, ठीक है? अब टेल मी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दिस अकॉर्डिंग टू यू? Yeah, the concern that oppositions are coming up with. Apart from what I have mentioned. Okay. ग्लोबली क्या इम्पैक्ट करेगा ये? It raises the question. तो सबसे पहले अच्छी बात तो यही है हमारी सोसाइटी की, दैट फाइनली वी आर रिकॉग्नाइजिंग दीज थिंग्स। पहले बच्चे ही नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, राइट? नाउ government is identifying these, as there is this one bill also passed about the work culture, and finally this so this tells us कि finally mental health को, और ये जो छोटी छोटी चीज थी, राइट, दे आर लाइक कमिंग अप विद, ठीक है? और फाइनली उनको रियलाइजेशन और फाइनली उनका इम्पैक्ट दिख रहा है सोसाइटी पे, राइट? सो ग्लोबल सिग्नल ये करेगा कि इट इज लाइक वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेशन फॉर सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन, ठीक है? अ पॉलिसी लीडर इज लाइक डिजिटल गवर्नेंस टू अस, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं जो भी बाकी कंट्रीज है वो भी इन चीजों को देखेंगी एंड दे विल आल्सो कंसीडर टू इट, ठीक है?
अब ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात करें, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो दे प्लीज राइट दिस डाउन दैट डिजिटल सर्विस एक्ट इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड देयर, दैट इज डीएसए, राइट, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है चाइल्ड सेफ्टी के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। देन वी हैव यूके, दैट इज ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, राइट, व्हिच प्रोटेक्ट्स माइनर्स कि वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए उस चीज से। देन वी हैव इन यूएसए दैट इज डिबेट ऑन लाइक बैनिंग सोशल मीडिया फॉर टीन्स आल्सो, ठीक है। और हमारे इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो ही गया था फॉर दीज कंसर्न्स, राइट, फॉर सेफ्टी कंसर्न, और देयर वर अदर पॉलिटिकल कंसर्न्स आल्सो, बट देन दिस वाज आल्सो लाइक केम अप विद कि बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है बच्चों को, राइट। देन चाइना में भी बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइमिंग्स है माइनर्स के लिए, राइट, एंड गवर्नमेंट मेक श्योर कि वो एक्सप्लॉइट ना हो उस चीज से। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ग्लोबली भी बाकी कंट्रीज में भी ये चीज देखने को मिली है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ओके, okay. Next news is Kerala local body polls BJP captures power in Thiruvananthapuram, corruption ending decades long LDF rules. Okay. तो बेसिकली इमेजिन करो कि एक सिटी है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज लाइक देयर वाज लाइक गोइंग फॉर द डिकेड्स, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे, ठीक है। नाउ इलेक्शन कम, लीडर्स चेंज, बट द रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी रिमेन्स द सेम, सो दिस वाज लाइक गोइंग फॉर द डिकेड्स। People get used to it and they start believing that the city will never change politically. अब उस चीज के साथ चल रहे थे, but the city is Thiruvananthapuram, that is like the capital of Kerala. तो बहुत टाइम तक यही चीज चल रही थी, and the city's municipal corporation was ruled by the Left Democratic Front, that is LDF. तो बेसिकली बाय द सीपी, ठीक है, सीपीआई, तो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी थी, राइट, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैडर्स बेस वाज सो स्ट्रांग दैट द मोस्ट पीपल बिलीव दैट दिस वाज लाइक द परमानेंट, ठीक है, और ये कभी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। बट इन द रिसेंटल local body election something unexpected happened, finally something unexpected happened. So for the first time Bharatiya Janata Party, right, BJP managed to capture power in this Kerala place, right. So ending decading of uninterrupted left rule. So this was not just a local election rule, but it was like a political signal also, ठीक है। अभी यूपीएससी के लिए मैटर क्यों करता है, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट दी GS2 like politics and governance. This talks about GS1 Indian society और political geography, and it talks about essay paper also कि कैसे हम डेमोक्रेसी को रूल कर सकते हैं, राइट, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पॉलिटिक्स शिफ्ट होती है, राइट, एंड अबाउट द फेडरलिज्म ऑल्सो एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इंटरव्यू, राइट, क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, इट टेल्स अस अबाउट द लोकल इलेक्शंस एंड रोल ऑफ म्युनिसिपलेशन ऑल्सो, ठीक है। तो बात करते हैं बैकग्राउंड स्टोरी की। तो बहुत टाइम से केरला में जो बेसिकली है डोमिनेटेड बाय द टू अलायंसेस। तो पहली अलायंसेस है एलडीएफ, दैट इज लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरी है हमारे पास यूडीएफ, दैट इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो पावर हैज लाइक यूजुअली रोटेटेड बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में चल रहा था, बट द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज। तो बीजेपी ने जो है बहुत कम चांसेस रहे थे हमेशा से ही, बट ट्रेडिशनली हैड वेरी लिटिल प्रेजेंस इन केरला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैपिटल सिटी पॉलिटिक्स में इनके चांसेस कम ही रहते थे, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, राइट। बट द स्टेट कैपिटल वाज लाइक कंसिडर्ड, इट लेफ्ट विद द like stronghold to the left, that is LDF, for many years. Now what happened, तो अभी क्या हुआ कि बीजेपी like one control for this municipal corporation and this like ended decades of LDF dominance, ठीक है। फाइनली कैपिटल सिटी में यहाँ का डोमिनेंस इनका खत्म हुआ। सो दिस इज सीन एज लाइक अ मेजर पॉलिटिकल ब्रेकथ्रू फॉर द बीजेपी इन केरला, राइट। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट विनिंग सीट्स, दिस इज मोर देन दैट, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल इक्विजिशंस आल्सो, बैलेंस फॉर्मेशन की बात करती है। अगर एक ही टाइम पे, राइट, हमेशा से एक ही पार्टी होगी तो व्हाट इट विल लीड टू, एग्जैक्टली। सो अब ये कैपिटल सिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दे हैव लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस आल्सो, बिकॉज दिस इन्फ्लुएंस बेसिकली मीडिया नैरेटिव आल्सो, एंड दे एक्ट एज लाइक अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एंड दे आर ऑफन सीन एज ट्रेंड्स, राइट, फॉर द अर्बन वोटर स्पेशली, ठीक है।
तो जब भी पार्टी की विन होती है, दिस इज लाइक द कैपिटल सिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विन्स आल्सो, और ये सिग्नल करता है बेसिकली कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है with the urban voters वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है. And this is also tells us about the ability to change long standing political dominance also, as it is said कि LDF जो है वो बेसिकली बहुत टाइम से ही लीड कर रही है, राइट. सो बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि they were like strengthened by the 74th constitutional amendment and they like represent other democracy also, decentralized democracy also. तो दे हैंडल अर्बन प्लानिंग, ठीक है, सैनिटाइजेशन, रोड्स, वाटर सप्लाई और हमारा लोकल जितना भी सर्विसेज है वो सारी, एंड दे आर लाइक क्लोजेस्ट टू द पीपल्स डेली लाइफ्स आल्सो, एज पॉलिटिकल शिफ्ट्स फ्रॉम लाइक वेरी लोकल सर्विस टू द मोर मीनिंगफुल वे. सो अब ये जो है हमारे रिजल्ट ये हमें बताता है कि केरला के वोटर जो है वो बेसिकली स्टेबल और आइडियोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं है, दे वांटेड मोर, राइट, एज दे शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट वर्सेस टू द कांग्रेस, राइट. So now voters, especially in like cities, they are like becoming more flexible. This is what this news tells us. और issue जो है ये है कि governance और development और हमारा urban management का और leadership का ये कहीं ना कहीं हमारे decisions, voting decision को influence करता है, right? How government is treating us, what initiatives they are taking, right? And when especially this all news is all about like citizens, ठीक है, as this was said by many thinkers कि we citizens should not be only governed, right? We should be the one who should question the authority. Dumb होके we should not act as the authority says to us, right? And this was seen in this place also कि finally they realized and they changed it to be another government, right? अब वो कितना काम करती है that is the another question that is debatable, but then again the shift could be seen because of it. अब ये मैटर करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में because this talks about the democracy, right? डेमोक्रेसी के बारे में बेसिकली दिस इज लाइक द चेंजेस हैपनिंग फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ये टॉप से इंपोज नहीं है, दिस इज लाइक द चेंज दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द बॉटम, देन इट इज लाइक लोकल बॉडीज आर बिकमिंग पॉलिटिकल लॉन्च पैड्स आल्सो. दूसरा बात करता है हमारे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है, तो जो हमारा नेशनल पार्टीज है दे आर एक्सपेंडिंग इनटू रीजन्स वेयर दे वर लाइक वंस वीक, एंड फाइनली स्टेट्स जो पॉलिटिकली क्लोज स्पेस नहीं रखती है दे आर लाइक ओपन टू अस, फाइनली ये वहां तक भी स्प्रेड हो रहा है दिस फेडरलिज्म, राइट. डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है कि अर्बन लोकल बॉडीज आर नो लॉन्गर जस्ट service founders, they are like center of political parties also, center of political powers also, right? समझ में आई थी कहानी? Now another news, Messi event chaos, inquiry panel members reached Salt Lake Stadium to carry out inspection. Another important news. Okay. Imagine करो कि इतना बड़ा स्टेडियम है, right? And it is like packed with thousands of excited fans waiting to see their favorite footballer stars, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने लाखों रुपए दिए, हजारों रुपए दिए, right? Now this Lionel Messi, right, one of the greatest player ever, people had like paid money, traveled from far, and they were like full of excitement कि finally हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ एक झलक के लिए they were so excited, right? But उसका opposite ही कुछ हमें देखने को मिला. So this event was like part of the Messi's visit to India and was like a big celebration and had been like planned to the Salt Lake Stadium in Kolkata. So including Hamari Waves interactions, maybe even some footballers were there, right? And they like everyone like they hyped it and it like became very memorable moment. So this was the all planning, right? But when Messi briefly appeared, things didn't go as expected. तो उस वहां पे क्या मिली? वहां पे मिली हमें mismanagement. Did you read this news? ओके, तो बहुत सारे फैंस को उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है, एंड दिस क्राउड गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री. Some people started throwing bottles and like tearing streets, and parts of the stadium was also damaged. And this event quickly became very chaotic, so much that Messi left the stadium early for safety concerns. Now, अब basically जो हमारे ये जो spectacle था, it turned out to be something very messy. As Messi was there, it became more messier. ठीक है. So seeing the messy and damage, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, publicly apologized to Messi and the fans for the mismanagement. Okay? And she also appointed a high-level inquiry committee, heading that retired High Court Judge Justice Ashish Kumar Ray, कि बेसिकली जितने भी हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ में आप लोग ये जो है इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, और पता लगाओ कि मिसमैनेजमेंट हुआ क्या, that what went wrong, right? So the committee's job is to see the security arrangements, crowd flow, damage कितना हो रहा है, ठीक है, lapses कितने ज्यादा हो रहे हैं, and this also tells about the future, और अगर आगे कोई ऐसे बड़े इवेंट होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेसिकली कंसर्न लेके चलने पड़ेंगे, राइट? So we have to learn this from this mismanagement. So police have like registered FIR and the main event organizer has been arrested for the mismanagement और हमारा जितना भी public disorder हुआ था उसको लेके. अब ये यूपीएससी के लिए मैटर क्यों करता है? Because this talks about GS2.
बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट GS2, इट टेल्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और वो अगर ठीक से नहीं होते, मिसमैनेजमेंट होता है, व्हाट आर द अथॉरिटीज लाइक आर गोइंग टू डू, राइट? देन गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी लेगी गवर्नमेंट अगर मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है, एज ममता बनर्जी आल्सो टुक द अकाउंटेबिलिटी, यू कैन राइट दैट इन द एग्जांपल. देन GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर और क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, and it is very important for SN interview as it talks about public administration, trust and safety also. And as they were like leaders, right? Messi was there, so worldwide kahin na kahin India ko represent kar raha tha, right? So this also raises the concern, this also raises the question on our image also, our country also. This is why we are reading this news. समझ में आई? Okay. तो हुआ क्या कि थाउजेंड ऑफ फैंस गैदर्ड, ठीक है, इन द स्टेडियम, एंड द इवेंट वाज प्रमोटेड एज अ चांस टू सी लियोनेल मेसी, एंड इट वाज सीन कि बहुत ज्यादा पुअर प्लानिंग थी, मिसमैनेजमेंट था, और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से ओवरक्राउडिंग हुई, कंफ्यूजन हुई पहले एंट्री गेट्स पे, फिर उसके बाद बहुत सारे जो फैंस थे, राइट, वो इवेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंचे वो प्रॉपरली मेसी से मिल नहीं पाए, राइट? तो frustration ज़्यादा बढ़ गई, right? So because of this frustration, what happened that the fans started throwing objects. Stadium sets were like damaged and protests broke out into inside the venue. So पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ने इस चीज पे रिस्पॉन्स दिया. The situation began to like affected like public order, right? Police intervention और basically control करना उन्होंने शुरू किया crowd को. And these laws and order was eventually restored. But the incident had already escalated. वो और ज़्यादा बढ़ चुका था, right? So this shows that how poor event planning can quickly turn into a policing issues also. ठीक है, गवर्नमेंट का इस पे रिस्पॉन्स आया कि फाइनली गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर पे इस चीज पे सॉरी मंगा, अपॉलॉजी किया, राइट? And West Bengal CM Mamata Banerjee, right, publicly apologized, and she called the incident unfortunate, right? And it is said that it was like caused by the mismanaged and not the public internet, right? So this reflects about political accountability also and about the damage control also. अगर हम बात करते हैं जुडिशियल इंक्वायरी की और ऑर्डर्स की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप है जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ की पॉइंट ऑल्सो, विच इज हेडेड बाय जस्टिस दैट इज रिटायर्ड जस्टिस, दैट इज अशिम कुमार रे, एंड इंक्लूडेड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ऑल्सो. अब उनका टास्क क्या होगा? उनका टास्क होगा कि इन्वेस्टिगेट करो कि गलत क्या हुआ, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की थी, राइट? फिर तीसरा सजेस्ट करो कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इवेंट होता है तो वो चीज दोबारा रिपीट में ना हो, राइट? So for these reasons, this committee has been introduced. तो कमेटी क्या है? वो इंस्पेक्ट करेगी स्टेडियम को, ठीक है, एग्जामिन करेगी सिक्योरिटी हमारे अरेंजमेंट्स को, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रहेंगे, और क्राउड का मूवमेंट प्लान करेगी प्रॉपर्ली, ठीक है. तो एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजर आल्सो बी टेकन, तो द मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर इज अरेस्टेड, ठीक है, एंड एफआईआर इज आल्सो रजिस्टर्ड. तो ये सारी की सारी चीजें हमें बताती हैं कि देयर आर सम अकाउंटेबिलिटी दैट द गवर्नमेंट हैज टू इन सच इन दिस, ठीक है. और चार्जेस भी जो है वो रिलेट किए गए हैं मिसमैनेजमेंट से, एंड इट विल लाइक कॉज पब्लिक डिसऑर्डर आल्सो, फेलियर टू एंश्योर सेफ्टी आल्सो, and this shows that private organizers are legally accountable, right? And this also shows that big events like cannot accept responsibility by blaming crowds. तुम सिर्फ क्राउड को ब्लेम करके नहीं कर सकते, वहां पे मिसमैनेजमेंट भी थी, राइट? कितने लोग थे तो जो इवेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, इतने सारे पैसे दिए, दे वांटेड टू मीट मेसी, दे वांटेड टू सी मेसी, उन्हें देखने को भी नहीं मिला, राइट? सो दिस वाज ऑल नथिंग बट मिसमैनेजमेंट. क्राउड की यहाँ पे गलती नहीं थी. वी ऑल न्यू कि इतना क्राउड आने वाला है, टिकट्स वर ऑलरेडी देयर, राइट? सबको पता था कितना क्राउड आएगा, तो मैनेजमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए थी, बट दिस वाज नॉट सीन, राइट? तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे पुअर क्राउड एलिमिनेशन देखने को मिला है. हमें यहाँ कहीं ना कहीं हमें वीक जो है टिकटिंग देखने को मिली है, एंट्री जो थी हमारी प्रॉपरली हैंडल नहीं की गई थी, राइट? सो दिस इज लाइक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजर्स, पुलिस, और बेसिकली देखा जाए तो हमारा स्टेडियम अथॉरिटीज के बीच में, राइट? सो दिस इज लाइक ओवर प्रमोशन विदाउट कैपेसिटी प्लानिंग ऑल्सो. अंडरस्टूड? ओके. So I hope they understood that what the incident was, that 1,000 fans were there, they wanted to meet Messi, but it could not happen because of the mismanagement, as it was like promoted but poorly managed, and many fans could not see the event. We are reading this because overcrowding was there, poor entry management was there, confusion was there, fans threw bottles, right? Situation became very unsafe and very chaotic. So to this, immediate action was seen, right? Celebratory event turned into a law and order problem, and to this one committee is introduced, and Mamata Banerjee has also apologized publicly to saying this was something, is the fault of mismanagement, and we are inquiring to it. ठीक है, कहानी समझ में आई इतनी? Okay. So we are ending this current affair, and I'll see you tomorrow at the same time. Thank you. Thank you.